is supposed to solve a lot of problems. And when we talk about solving problems, it's like we give some information, we give some data to that brain, it processes that information and goes into the mode of solving. So that is what our backend, most of the backend is all about. So there are a lot of different technologies when we talk about backend. And first of all, let me just open this. So backend is mostly the brain of the website. So when we talk about the brain of the website, you must be wondering that why were we doing so many things in the front end? That is all because the modern web development has moved so well that it has separated a lot of things for us. Now, there is this principle, standard we call it, and that standard is called single responsibility principle. Do you know what the single responsibility principle means? What comes to your mind when you read this? What do you think this means? This is mostly single task per person or resource. I guess it's about one technology doing only one thing. Correct. You guys are right in the way you are thinking, but it's like, let's go down to a very low level of understanding of what single responsibility principle is. So for that, I'm going to take an example. Let's say I'll call this function cal area. And this returns me some value based on, let's say, I go ahead and write, I receive a parameter called radius, and I return some 2 star 3.14 star radius double star, that is to the power of 2. So what this is doing is, this function is only responsible for calculating the area of the circle, okay, of circle. So what we have done here is we have created a very basic function which does only one thing, which just returns me the area of the circle. Now, you can very well do a multiple functionality or pass multiple set of instructions to this one. And you can say, I can also calculate perimeter. It's totally wrong. Pi r square, right? 2 into pi r is this. Correct, Anand. Thank you. Thank you for this. This is correct. Pi r square. This is right. All right. Yeah. Good point. So I initially thought that I will start with a perimeter calculation, then I switched to area. Anyway, so now you can also say that inside this function, I can also calculate the perimeter. So I will say let perimeter is equal to 2, 3.14, 2 pi r, right? So radius, whatever radius we receive. And you can return both the values from here. But with the single responsibility principle, what we are doing is, this will work fine. There is no problem in this. But the problem is, once this start getting a lot of inputs, once it starts getting to have a lot of instructions in one single function, what starts to happen is a lot of spaghetti code starts to get created. When I say spaghetti code, what do you mean? Have you guys ever had spaghetti? And if I get the spelling right, is it the right spelling? I'm not sure. Right? So when we talk about a spaghetti code, it is kind of a mess. Things get things get messed up, and when we want to come back and watch our code, we have a hard time just understanding what we have written. So to avoid that, over the years, people have started modularizing things. How many of you have heard about microservices? Yes, Shivansh has.
By the word micro also, you will understand when we talk about any kind of service, it will have a lot of functionality. Now, if we have a lot of functionality written in one function, it might work. Performance might be an issue because there is a lot of line of code that we need to execute. And after that, we are just using a specific part of that whole code to bring an output. What microservices, and this is a very popular thing that is coming nowadays, what these does is they break down the services into smaller services. And that way, we can actually start targeting just the specific service that we want. Okay. And that's why we need to stick to single responsibility principle. So when I say single responsibility principle, one class or one function should do only one type of thing. You can go ahead and write multiple things, but we should have this thing in our mind that whenever we are talking about creation of or solving any problem using programming language, we should always structure or design our backend in such a way that it does only one thing from one function. It can be one class. Let's suppose there is a backend class where we are storing users' data. So one function is going to store the data, one function is going to give the data, one function is going to update the data, one function is going to delete the data, right? So that is what I mean by single responsibility principle. Now, in our scenario, there are, let me clear this out. When we talk about backend technologies, there are numerous backend technologies. One of the very popular one is the Java technology, and there are frameworks associated with that. And the frameworks associated is one such framework is Spring Boot. Yes, Spring, and Spring Boot is also on top of that. Then there are advanced JPAs, which is basically our connection from the backend to database. Java is pretty popular like that. There is Ruby to that with the framework of Ruby on Rails, right? So Rails is a framework and Ruby is the technology. And it was very popular when I started working. I was working in Ruby, and at that point of time, it was gaining a lot of traction. It still is. It's a beautiful language because this is the first language which started extracting or encapsulating a lot of functionality which you had to write from the scratch. तो फ्रेमवर्क वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रूबी के साथ स्टार्ट हुआ था. ऑन रेल्स का फ्रेमवर्क क्रिएट कर दिया और उससे फुल स्टैक डेवलपमेंट होने लगा. Currently, there is also PHP based websites which are created on the backend. Right now, what we are going to do is we are going to have a JavaScript backend. Okay. So when I talk about JavaScript backend, we are going to talk about Node. Let's say, yeah, Node, Express, and then we go to database. So first of all, we need to understand the backend part, which is just the Node and Express part. And then we will move on to the backend part. So Node and Express. So Node is also an environment. It's also an environment, but this has given us a lot of functionality to write JavaScript in the backend. अगर मैं आप लोग को honestly बताऊं तो ये C++ पे लिखा गया है. I guess a lot of you might know this. Node has been written on C++. You wouldn't say very popular. Python has also come up into the picture. Python is taking a lot of traction in the market for the backend. But JavaScript के साथ क्या है कि हमारा front end तो JavaScript में होता ही है. Like you won't see any other technologies in the front end. Most of the frameworks that you are going to see out there are going to work with the framework of JavaScript for the interactivity along with HTML and CSS. ठीक है. जब backend में भी JavaScript introduce हो गया है तो हुआ क्या है कि it has created a lot of ease of writing the code for a developer. So when we talk about mean stack or MERN stack, उनका जो backend है वो भी JavaScript में. तो code
जो भी एक कोडर है उसके हिसाब से देखो, ही इज वेरी एफ्लुएंट इन जावास्क्रिप्ट, तो उसको पिकअप करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि बैकएंड की टेक्नोलॉजीज कैसे काम करेगी. ऑब्वियसली द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हैज टू बी एनहांस्ड, द वे यू आर engaging those concepts has to be enhanced, your web development concepts or the networking concepts has to be enhanced, but the language part will be sorted in a way, right? So ये क्या है, तो C++ क्यों है यहाँ पे? तो बेसिकली होता क्या है, do you guys have you guys ever seen explained on Netflix? किसी ने देखा है explained on Netflix? तो there is this शो, एक एपिसोड है, उसका नाम है कोडिंग. सॉरी, मैंने श्रीधर को भेज दिया पर्सनली. कोडिंग. सो देयर इज दिस थिंग कॉल्ड कोडिंग फ्रॉम एक्सप्लेन्ड. जरूर देखना अगर इफ यू आर वेरी इंटरेस्टेड एंड वांट टू नो अबाउट हाउ द कोडिंग हैज इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स. उसका बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ कि काम कैसे चलता है. बिकॉज कंप्यूटर डू नॉट अंडरस्टैंड, our computer do not understand whatever we are writing. It's one episode, Nitin, just one episode from explained series का नाम है explained, उसमें से एक episode है coding. Okay, तो let's say we are having C++ और machine level से start करते हैं. तो सबसे पहले machine language होती है, which is basically it converts zeros and ones. And this started a long back whenever computer was invented. Machine learning is a completely different thing. Machine language. So machine language is the lowest level of language that our computer understands, which is basically zeros and ones. ठीक है, सारे instructions zeros और ones में pass करते थे. तो एक word भी print करना हो तो उसके लिए हमें zeros और ones का sequence निकालना पड़ेगा. But it was taking a lot of time, and with time what happened is they started working with the assembly language, and there came an abstraction to this machine language called assembly language, which was a little better in terms of machine language. Zeros or ones के terms से better था कि उसमें कुछ set of instructions लिखते थे, but it was still a very difficult language to understand. And over time हर चीज में we look for development, how it progresses, how are we progressive in nature. So assembly language समझ में आ गया मेरे को कि चलो ठीक है डिफिकल्ट है, तो इन्होंने क्या किया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लाइक सी लैंग्वेजेस दे स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग, which is another level of extraction on top of assembly language. And similarly object oriented programming. तो ये जो हमारा C++ है sits right over here. So you might understand कि sometimes a lot of people say कि C++ जानना बहुत जरूरी है because it is very close to how our system works. All that instructions that we pass, we understand that what we are passing. And then came this JavaScript engines. Okay, so this was the whole layer जो हम लोग बैकएंड में लिखते थे. This kept on evolving and अलग अलग languages आना शुरू हो गए. On this particular layer where you see C++, what happened in 2008 was they introduced a JavaScript engine. What JavaScript engine is? So one name that we saw right now, I think someone said, Shivansh said V8. Yeah, correct. So V8 is one such engine. It is one such engine which helps us to write JavaScript code. So this is a JavaScript engine. This is a JavaScript engine. And this JavaScript engine helps us to write the JavaScript language in a non-JavaScript environment. तो हम लोग का front end जो था वो it was built for JavaScript, but backend was not built that way. What this V8 engine does is it kind of gives me an interface where I can start writing JavaScript. ठीक है, तो this became our Node technology, Node. And on this, I can write my regular JavaScript.
Okay, so this is what our V8 engine does, or a JavaScript engine does, and this is how we are able to write the backend code in the JavaScript. Yeah, correct. How we are able to write JavaScript in the backend. And Node is for the backend. No, Anam, no, that is not the right statement, I would say. तो हमने अभी तक रिएक्ट में क्या किया था, नोड ही यूज कर रहे थे, राइट? बेसिकली हम लोग एक लोकल सिस्टम के सर्वर को एक डेवलपमेंट सर्वर में कन्वर्ट कर रहे थे बाय सेइंग npm start, and it was executing a set of instructions based on the node modules and the dependencies, and it was kind of creating a system of backend. नहीं तो क्या हो रहा था कि हमें सिर्फ जो एनवायरनमेंट मिलता था जावास्क्रिप्ट का, वो सिर्फ ब्राउजर के अंदर मिलता था, हमारे लोकल सिस्टम में नहीं मिलता था. ओके, सो क्योंकि वो सिस्टम हमें सिर्फ ब्राउजर पे मिलता था, इसलिए हम सारा कोड ब्राउजर पे जाके एग्जीक्यूट कर देते. फ्रंट एंड का सारा कोड ब्राउजर पे लोड होता है एंड देन इट स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग. बट नाउ विद द node environment coming into picture, it is given us the functionality of writing the code in our terminals or in a particular environment, which is the backend environment or a local environment or a server environment. Okay, I think someone raised hand. Ganga, you have a question? Yeah, Gagandeep, someone raised a hand. Okay, cool. ठीक है, तो इसको थोड़ा देखते हैं इसका मतलब क्या है. मैं बोल रहा हूँ तब से कि बैकएंड में लिख सकते हैं, इसका मतलब है क्या? तो चलो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. ये हमारा रिएक्ट यहाँ पे आ गया था. अब एक नोड का फोल्डर बनाते हैं और यहाँ पे सारा कंटेंट इंक्लूड होगा. ओके, आई विल गो इनसाइड नोड, क्लियर इट आउट. Now to create a file, let's go ahead and create or before I start creating a file, you guys have already installed Node. So if you do this -version, what it gives me, it kinds of execute a script. Now if I just go ahead and say Node, what I have done is I have entered in the Node environment. अब मैं यहाँ पे जाके console.log और normal JavaScript function लिखता हूँ inside Node environment. If I press enter, what it does is inside Node environment, it prints it out. But also it kinds of says undefined because मैंने console जो कि Node का console है उसके अंदर एक और console.log लिख दिया. So ignore this for the moment. Let's use some functionality. Let array is equal to एक number array ले लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. And so it is saved. Now if I try to print array, what do you see? Does it feel like that I'm working in a IDE? I'm working in an environment which allows me to do this, right? So it is kind of an environment that I'm able to work on. Can I do it in a regular terminal? If I just open the terminal, do not type node, and if I start typing this, will it allow me to do something like this? No, right? Because that is not the environment, and this is the environment, and that's why we need backend environment. So there is an engine that is coming into picture over here. There is an engine that is coming in picture over here, and that engine is basically written in C++, which helps us to convert it to machine language, which our machines can understand, and then reply back in the same manner that we want it to. Okay, so if I try to exit over here, it will say it is not defined. So I'll say Control C and say Control C again. So as I said, JavaScript is an interpreter language. It interprets every time.
Now, if I go inside Node again, let me just go inside Node environment again. And I give it a set of instructions. Let's say let str is equal to hi and let number is equal to 2. ठीक है, ये लिख दिया. अब मैं अगर str concatenate number करूंगा, it will give me a concatenated value or a concatenated output. Correct? So this is kind of something similar that we had been doing. But पहले क्या होता था कि ये सारी चीजें हमको उसमें मिलती थी ब्राउजर में. So let me open this server and I will share the screen and I'll show you what I mean by कि ये हमें सर्वर पे मिलता था या ब्राउजर पे मिलता था. तो there you go. So when I talk about the JavaScript environment, होता क्या है कि it gets all the code loaded in the browser and then it starts working. So I'll just remove the responsiveness. I just don't want this. तो यहाँ पे देख रहे हो कंसोल के अलावा और भी टैग्स हैं, सोर्स हैं, नेटवर्क है, there are a lot of things, memory, application, security. So if I go into sources, open this thing, there is nothing at the moment for me. If I talk on the pages, so there was no file that we had loaded. There is page system and it, as you can see, there is the code that it is loading. ये है तुम्हारा index.html और ये है तुम्हारा JavaScript file, right? It is the JavaScript file. So ये लोड होता है और इस एनवायरनमेंट में ये चल सकता है एंड इसलिए हमें ये सारी फंक्शनैलिटीज यहाँ पे मिलती हैं. ये सारी चीजें जो प्रिंट हो रही हैं, जो हमने लिखा है, वो यहाँ पे मिल रहा है. बट सेम चीज को हम अब बैक एंड में भी कर सकते हैं. Why? Because we have also seen that this is working flawlessly in my terminal once I go inside the Node system. Are you understanding the usage of Node? What Node means? Any doubts still here? Anyone having any doubt? Shall we go ahead with the description of Node? All right. Cool. So ये सिस्टम मेरे को मिल गया. अब मेरे इसको बंद कर देना है. I do not want this JavaScript. Node में एक बेसिक फाइल लिखते हैं and I will call this app.js itself. So when I am calling this as app.js, I can write बाकी सारे tabs बंद कर देते हैं because we might not need them. I just want to work with the Node folder. Cool. So now if I type console.log and I say global, मैं ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ and okay, let's go back to this and I am going to type Windows. Windows object के बारे में तो हमने काफी बात करी है कि this is an object that is created. Similar to this Windows object, so यहाँ पे देखना console.log statement होगा कहीं पे. console दिख रहा है कहीं पे? So this console.log statement should be somewhere. Okay. One second. My point is that console.log statement is here in the global scale, and that's why whenever I type anything inside the console.log, it prints it out here. Okay. Similarly, similar to this Windows object, because that is a part of our Windows object. Similar to the Windows object, we have this global object for the backend, and it will do the same thing. So how do I see this? Where do I see this? So let me save this. And to execute any Node file, we use Node and the name of the file. So if I say Node app.js, it is going to execute this file. And it says global is not defined. All right, cool. Is it small g?
Let me just check and execute. Obviously it tells me इसने read किया file और उसने बोला हाँ it's small g. Sorry, my mistake. So it read that particular global object and it showed me उसमें क्या क्या चीजें हैं. ठीक है, as you can see it is an object and it is a global object. So ये जो console.log statement हम locally print करना चाह रहे हैं, what we are using is we are using the local the windows or the global object in the node system. It is similar to our windows object which is for the front end, global is for the back end. और इसमें आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा जो भी चाहिए आपको बैक एंड के लिए, क्या चाहिए, जो भी हम यूज करेंगे वो सारा इसके अंदर लिखा हुआ है. ठीक है, एंड देयर इज सो मेनी थिंग्स टू दिस, there is so many things to this, and let me show you something. So there are certain functions associated with this as well. So clear timeout, clear interval, clear immediate, set timeout, set interval. And let's go back to our main Windows object. और यहाँ पे भी set timeout, clear interval, same functions are there. But the only thing is this is for the front end and the global object is for the back end. Getting it? That how node is being created. So it is the same thing as our front end. तो अब जो भी चीज हम लिखेंगे हम लोग इस environment में लिख रहे हैं. And to see how to execute this, we need to specify this particular, where did it go? Yeah, this particular command, which is like I'm trying to execute this file in the node system. So I go into the node system and node system starts reading it. And that's why it is called a input output non-blocking environment and also event driven. Have you read this thing before? Input output non-blocking event driven. जब आप इंस्टॉल कर रहे थे तो देखा था ऐसा कुछ लिखा हुआ. So let's go and check it out. तो ये है तुम्हारा main Node.js का system. Where it does, if you want to install this, you have already done this for React because React works on this node system. But if you want to install it again, you can go ahead and install the version that matters. And it is built on Chrome's V8 JavaScript engine. So Chrome was the first one to get out the V8 JavaScript engine और उसी same engine को use करके Node बना है. आपका Safari का different JavaScript engine हो सकता है क्योंकि Safari पे V8 is a Chrome's one, so it will work in Chrome. I think it was तुम्हारा जो Bing, no, Internet Explorer का is Tamper Monkey or something if I'm not wrong, or is it of Mozilla? Mozilla का अलग V8 engine है, तो सबका V8 engine का नाम, not V8 JavaScript engine का नाम अलग हो सकता है, but functionality same होगी सबकी internally. Here and there some changes are there, so that's why the compatibility comes into picture. That you must have been seeing कि सारे even HTML CSS में भी बताते हैं कि इसमें compatible है कि नहीं है. तो all these small little changes comes as a part of their development. तो अगर कुछ भी रेफर करना है कहाँ जाएंगे? डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे इसके, और जो भी वर्जन है जो लेटेस्ट है ES6 एंड बियॉन्ड का वर्जन है वो सारा कैसे होता है. तो अभी आप देखोगे मैं बहुत सारा जो कोड यूज करूंगा आई विल बी यूजिंग ES5 वर्जन, क्योंकि ES6 का बहुत ज्यादा स्टेबल वर्जन अभी तक आया नहीं है सपोर्टिंग फ्रॉम द बैकएंड. इट इज देयर, यू कैन यूज द import export functionality and all that stuff, but I prefer to use the ES5 feature mostly at the backend क्योंकि that is well supported. ES6 के features में बहुत सारा अलग configurations करना पड़ता है आगे बढ़ के मेरे को, so I stick to ES5 most of the time. Okay, now let's say I am working on 10 point something, you might be working on 13 point something. So when I talk about this, let's go in 10.1 versions, and these are the files that you will see. These are the APIs
that Node.js provides us. So when I talk about APIs, kind of functions that it provides. तो हमने console already use किया, तो इसको देखते हैं सबसे पहले. And as you can see, it is a class written in the backend. stdout, stder, all these are C++ commands. ठीक है, but तुम्हें इतने ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है. It will tell you that ठीक है, ये stable version है, ये जो function है या ये जो method आप use कर रहे हो, it is stable, and we can use something like this. And we have already seen this happening, right? Do you understand this? That how these functions are created and how these documentations are there. This was the one that I was trying to refer to, the global objects. और उसमें से मैंने ये global print किया था. So this is the global namespace object in the browser. The top level scope is the global scope. This means that within the browser, var something will define a new global variable. In the Node.js, this is different from the top level scope is not the global scope. Okay, in the Node, this is different. The top level scope is not the global scope, where something inside a Node.js module will be local to that module. तो अभी हम लोग मॉड्यूल सिस्टम समझेंगे, बट ये जो अभी हमने क्रिएट किया है, इसका मतलब ये है, वो बोलना क्या चाह रहा था कि ओके या गेको फॉर मोजिला एंड स्पाइडर मंकी फॉर इंटरनेट एक्सप्लोरर, आई गेस करेक्ट. सफारी का भी था ना कुछ, सफारी का क्या है. तो ये जो ग्लोबल है, ये बस इस पर्टिकुलर फाइल के लिए एप्लीकेबल है. अगर हम यहाँ पे 2-3 फाइल और लिख दें तो उसमें ये सारी कंप्लीटली नहीं काम करेगा. तो बेसिक आइडिया हो गया मेरे को कि क्या करता है Node.js, कैसे काम करता है, कौन से डॉक्यूमेंटेशन को रेफर करना है, ये सब का आइडिया हो गया मेरे को. अब मेरे को क्या जानना है कि इसको यूज कैसे करते हैं. बहुत बातें कर ली हमने, तो इसमें वही सारी सेम चीजें यूज करते हैं क्विकली जो कि हम लोग पहले यूज कर रहे थे. तो कुछ फंक्शंस यूज करना शुरू करते हैं. तो जो अभी देखा था हमने सेट टाइम आउट और ऑल दीज फंक्शंस दैट वी हैव सीन ऑलरेडी, लेट्स स्टार्ट एंड यूज दोज फंक्शंस. सेट टाइम आउट बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जो तुमको कैपेबिलिटी देता है अपने कोड को रोकने के लिए थोड़ी देर के लिए. ठीक है, तो लेट्स से आई विल से सेट टाइम आउट and this has a callback function inside it. तो ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है और इसका 2 पैरामीटर्स होता है. सबसे पहला पैरामीटर होता है एक फंक्शन जो कि एक एरो फंक्शंस भी हो सकता है या नॉर्मल फंक्शन कीवर्ड वाला भी फंक्शन हो सकता है. और दूसरा पैरामीटर होता है कितनी देर के लिए रोकना है. तो लेट्स से मेरे को 2 सेकंड के लिए रोकना है, सो 200 मिलीसेकेंड्स. एंड once 200 milliseconds are done, then it will call this particular function. So I will say console.log timed it for 2 seconds. Okay, so ये मैंने फंक्शन लिख दिया. ये ग्लोबल स्कोप में फंक्शन है इसलिए काम करेगा. अगर नहीं होता, अगर आपने कुछ अपने मन से लिखा होता तो वो काम नहीं करता क्योंकि उसको पता नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ है. So let me clear this out, and to run this I will say node app.js. और आप देखें ये 2 सेकेंड के बाद it waited for 2 seconds and then timed it for 2 seconds, right? Let's say I want to have this thing printed every 2 seconds, something like हर 2 सेकेंड में मेरे को प्रिंट करके देते रहो चीजें. तो उसके लिए एक और फंक्शन था, हमने देखा था set interval, right? So this set interval will actually similar to set timeout take in 2 parameters. One is the function parameter which is a callback function. ये एक callback function है. और दूसरा है कितने इंटरवल पे हमें ये चीज चाहिए. Like how, तो I said 2 सेकेंड के इंटरवल में ये फंक्शन बार बार क्लिक करता रहे. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, let's just first of all console.log timed interval for 2 seconds. So if I save this, पहले क्या प्रिंट होगा, timed it for 2 seconds,
एंड सेकेंड प्रिंट हो रहा है टाइम्ड इंटरवल फॉर 2 सेकेंड्स एंड देन इट कीप्स ऑन डूइंग एवरी 2 सेकेंड्स। तो इसका ये मतलब है कि ये फंक्शन यहाँ पे स्टक रहेगा, है ना, ये ऐसे चलता रहेगा। क्या लगता है आपको, कभी रुकेगा ये? नहीं रुकने वाला। बट इससे मेरे को ये चीज पता चल रहा है कि नोड भी सीक्वेंशियली काम करता है। सबसे पहले सेट टाइम आउट पढ़ा उसने, उसको एग्जीक्यूट किया एंड देन सेट इंटरवल पढ़ा। तो इससे बाहर आने के लिए मैं कंट्रोल सी करता हूँ ताकि आई कम आउट ऑफ द नोड एनवायरनमेंट एंड क्लियर इट आउट। सो लेट्स पुट अ लॉजिक दैट कुछ लेट्स से 10 सेकेंड या 15 सेकेंड के बाद ये इंटरवल बंद हो जाए। तो कुछ वैसा लिखते हैं हम लोग, कुछ वैसे कोडिंग स्टैंडर्ड्स लिखते हैं। तो एक डिफाइन कर लेते हैं वैर, ठीक, क्योंकि अभी भी वैर यूज हो रहा है। आपने देखा उनके डॉक्यूमेंटेशन में भी वो लोग वैर वैर की बात कर रहे थे। तो वैर यूज कर लेते हैं अभी के लिए, बट इसको लेट भी यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज इट, लाइक देयर इज नो प्रॉब्लम यूजिंग इट। लेट्स नॉट कंफ्यूज यू, लेट्स कीप इट टू लेट एट द मोमेंट एंड इनिशियली आई विल मेक इट 0 और इसको एक एक्सप्रेशन में क्रिएट कर देते हैं and I will call this let timer is equal to set interval। ठीक है, हमने क्या किया, ये जो फंक्शन है इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया एंड वी आर प्रिंटिंग। ठीक है, इतना टाइम पास हो गया। तो जैसे ही ये फंक्शन ट्रिगर होता है हम लोग टाइम में कुछ ऐड कर देते हैं +2, राइट, क्योंकि हर 2 सेकेंड पे आ रहा है। सो आई विल से टाइम +2। सो आई एम एडिंग इट एंड यहाँ पे चेंज कर देते हैं टाइम has seconds has passed। सो ये बेसिकली ये टाइम को प्रिंट करेगा 0 2 4 8 7 समथिंग लाइक दैट। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज कि चलो ठीक है, इस फंक्शन को मेरे को रोकना है 10 सेकेंड के बाद, लेट्स सपोज। सो आई कैन पुट अ इफ कंडीशन समथिंग लाइक आवर जावास्क्रिप्ट। ये कंप्लीट जावास्क्रिप्ट जैसे ही लिख रहा हूँ मैं कोड, बट द ओनली थिंग इज दिस इज गोइंग टू लेट्स से ग्रेटर देन 10 जैसे होता है। हम लोग एक और फंक्शन यूज करेंगे क्लियर इंटरवल, और क्या क्लियर करेंगे, ये टाइमर जो हमने लिखा है। तो हमने बोला कि ठीक है ये टाइमर को क्लियर कर दो। तो अगर अब मैं चलाऊं ये फंक्शन और ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट जैसा ही है, इट सेज 2 सेकेंड्स हैज पास, 4 सेकेंड हैज पास, 6 8 और 10 एंड 12, क्योंकि ये थर्ड आइटरेशन में जब तक पहुंचा होगा तब तक ये 12 हो गया होगा, और जब ये चेक हुआ होगा तब जाके ये क्लियर हुआ होगा। तो 12 सेकेंड पे रुका। ठीक है, 12 सेकेंड पे उसने क्लियर कर दिया। तो द वे इट वाज वर्किंग, इट इज कॉल्ड एन इनपुट आउटपुट इवेंट ड्रिवन नॉन ब्लॉकिंग कोड। तो यहाँ पे ये सारी चीजें एक इवेंट के तौर से चल रही हैं कि यहाँ पे कुछ इवेंट हुआ है कि इंटरवल सेट करना है, एक इवेंट हुआ है जो हमें बता रहा है कि 2000 मिली सेकेंड्स के बाद इसको वापस इस कॉल बैक फंक्शन को कॉल करना है। तो वो बार बार वही कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी बेसिक फंक्शनैलिटी कि कैसे फंक्शंस जो ग्लोबल फंक्शंस है हम यूज कर सकते हैं, समथिंग सिमिलर टू आवर जावास्क्रिप्ट। और व्हाट सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट, इट इज जावास्क्रिप्ट। ठीक है, now there are certain other functionalities which are helpful in terms of usage। जैसे ये clear interval बहुत बार यूज करते हैं कि if we want to stop the code at certain point of time, तो हमने ये टाइमर लगा दिया और उस टाइमर के बीच में यहाँ पे कुछ और भेज दिया, कोई और वैल्यू भेज दिया यहाँ पे। तो let's clear this out and now I'm going to use certain utility functions which I usually call it utility function and it is the standard जो हमें help कर सकता है। तो आई विल से मेरे को जानना है कि ये कोड चल कहाँ रहा है। तो देयर इज दिस कीवर्ड अंडरस्कोर अंडरस्कोर डर नेम। व्हाट इट विल गिव मी, आई विल कमेंट दिस वन आउट फॉर नाउ।
what this will do is this will kind of give me which directory, yes correct, path कहाँ पे हम लोग किस डायरेक्टरी में, तो और एक दूसरा होता है फाइल नेम, हम वो पूरा पाथ प्लस किस फाइल में हम लोग काम कर रहे हैं वो बताता है. So that is __ file name. And let's see if I run this, what happens. So it tells me this is the directory, full stack Cypher schools, full stack beginners MERN / node is the directory, and Cypher schools beginners MERN node / app.js. So sometimes we want to read through a file, or sometimes we want to see what that file contains, and if there is some kind of text that is required for some functionality, we can go ahead and specify that read it from this file or read it from this directory. Now, if this code goes on a server, the location will change accordingly. क्योंकि ये उस जगह जहां पे भी ये कोड चल रहा है, ये उसका पाथ बताता है. Make sense? Any doubts in this? तो ये हो गए थोड़े यूटिलिटी फंक्शंस. ठीक है, तो इसका करेंगे क्या हम? कुछ नहीं करेंगे. अब हम लोग थोड़ा सा फंक्शन के बारे में देख लें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. फंक्शन इन Node.js. जब हम फंक्शन की बात करते हैं, हमने देखा था टेल मी व्हाट इज अ फंक्शन एक्सप्रेशन and what is the difference between a function expression and a function declaration? Can you tell me the difference? So I'll say function 1 and use the console.log statement. Normal function. Which one get hoisted? Function expression get hoisted? Does it get hoisted? No. But declaration does, right? So if I try to execute one before creating this, this will get executed. Kind of a revision for JavaScript. So if I say node function in Node.js, it does work, right? Now, if I create a function expression over here, this is kind of giving me some, it will not get hosted basically. So I will say let 2 is equal to function, anonymous function लिख रहे हैं इसको, और इसमें लिखते हैं console.log 2, और इसको कॉल करते हैं यहाँ पे. चलेगा नहीं चलेगा, गड़बड़ होगा, क्या लगता है? Press enter and it shows me an error. It says reference error 2 is not defined, which was expected because it is an expression. It does not get hoisted and therefore it is not able to read it or understand what it is, and that's why when it is trying to interpret it, it is finding it difficult to interpret and says कि मेरे बस की नहीं है ये. Now if I do this, this is going to work normally. It says normal function and it says 2, right? Now works similar to JavaScript in our front end, जो हमने पहले देखा था, जो हमने JavaScript की बात करी थी. It is working exactly the same way. इसमें हम callbacks बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, so थोड़ा सा callback का भी terminology देख लेते हैं. And I will say function 3 and I will call this as a callback. और इसके अंदर हम callback को कॉल करेंगे. तो हम क्या पास कर रहे हैं? आई एम पासिंग अ फंक्शन एज अ पैरामीटर. बट ये कॉलबैक है कहाँ से आएगा? तो बेसिकली जब हम 3 को कॉल करेंगे, उसके अंदर एक फंक्शन पास करेंगे, तो हम लोग 2 का रेफरेंस पास करेंगे. तो हम लोग क्या कर रहे हैं?
इस फंक्शन के अंदर ट्रू पास कर रहे हैं विच इज दिस फंक्शन. तो अगर इसको अभी हटा दें नहीं तो 2 बार प्रिंट हो जाएगा. इसको मिला टू फंक्शन which is this and then it executes it. So this will work. What do you guys think? It should. Everything works normally. What if I move it here? Will it work? Will this function work? Are you guys sure? Everyone? It looks like you guys are sure. Should I execute it? Let's see. You guys are saying it shouldn't. Interesting. कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है? कोई बता सकता है? It's a trap for you guys though. आप लोग को सही हो के भी मैं गलत प्रूव कर रहा हूँ. आप लोग सही हो बट फिर भी आई एम एबल टू प्रूव यू रॉन्ग. सही में सेव नहीं किया मैंने, बिना सेव किए एग्जीक्यूट किया था. लेट्स डू दिस एंड इट इज नॉट वर्किंग फाइन. हाउ मेनी ऑफ यू थॉट दैट ओके वी वर रॉन्ग? कंफ्यूज हुए थे क्या आप लोग 2 सेकंड के लिए कि शायद हमने गलत बोला था? No. So your concept, if your concepts are correct, Diksha, good. If your concepts are correct, if you know how things work, you won't be, you cannot be stirred from your position. You will be like, no, I know something else is going on. This has to work or this has not to work. If it is working, then there is some issue there. ठीक है, तो ये क्विक चेक था. ठीक है, अगर मैं इस फंक्शन कॉल को यहां कर दूं, will it work? Will it work now? सेव भी कर दिया मैंने. Let's clear it out. Yes, this should work. And it is working pretty fine. Right? So this looks like, okay, Node.js bhi normal काम कर रहा है, and this is the callback function we are using, and this is getting called back again, and there is an expression. Now I will talk about the module patterns. The most important thing is the module pattern. तो अभी हमने एक statement देखा था उनके directory में which said module pattern. So I'll just create a folder called module pattern और इसके अंदर चीजें लिखना शुरू करते हैं. So I'll have to go inside this module pattern now. Okay, now I will create a file, a different file, and I'll call this app.js. ये बाहर की फाइल नहीं है, ये अंदर वाली फाइल है. ठीक है? And inside this file, I am going to create some, let's say, functionalities. Or I will use var stuffs is equal to something. Like I would require something. कुछ ये फंक्शन है जो मेरे को कहीं और से आएगा. वो कहाँ से आएगा? किसी और फाइल से आएगा. और उस फाइल का नाम हम लोग रखते हैं provider. Let's say provider.js. तो यहाँ पे इसको हमने provider का नाम दिया, which means कि यहाँ से कुछ चीजें हमें चाहिए होंगी in our program. और इसके अंदर एक फंक्शन है, उसका नाम है counter, और उसको हम लोग ने एक फंक्शन बनाया हुआ है नॉर्मल फंक्शन कीवर्ड. इसको हम लोग एरो फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं. सो आई एम शोइंग यू कि सारे फंक्शनैलिटीज यूज कर सकते हैं. सो लेट्स यूज एरो फंक्शन. और अब आप लोग को पता है एरो फंक्शंस करता क्या है, सो दिस वोंट बी डिफिकल्ट. एंड दिस रिटर्न्स it returns some count. Let's say we have an array. If we pass an array to this, it is going to return me a count of it. So
I will pass some array over here. Array value लेंगे और इसको बोलेंगे कि there is a string which says this array has plus plus और arr dot length, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हमने array भेजना है. This is what I am supposed to do. Array dot length, ये एक वैल्यू आएगी items. तो मेरे को बस एक नंबर बता रहा है कि कितना काउंट है एक एरे का, और ये मेरा काउंटर फंक्शन का काम है. ठीक है. एक और फंक्शन है जो कि एडिशन कर रहा है. लाइक लेट्स से हमें ऐड करना है, दो नंबर हम पास करेंगे इस फंक्शन को. आई विल से एडिशन, और ये एक फंक्शन है और इसको लेट्स से दो नंबर्स मिल रहे हैं, ए और बी, एंड इट इज रिटर्निंग मी. चलो थोड़ा सा ES6 वैल्यू. हमने टेम्पलेट स्ट्रिंग की बात करी है क्या? हैव यू यूज्ड बैकटिक्स एवर? ओके, वी हैवंट यूज्ड बैकटिक्स इन आवर सेशन. तो ये चीज आप देख रहे हो, वी हैव टू गो आउट ऑफ द स्ट्रिंग, put a plus sign, concatenate it, and then again come back to the string. And this is a kind of a cumbersome method of writing. What I want to do is I want a way to dynamically include the values in my string. मतलब string भी लिखता रहूं और continuously जहाँ पे values आ रहे हैं उसको लिख दूं. तो अगर मैं यहाँ पे इसको इसके अंदर लिखता तो it would have printed it as a string, which I don't want. That's why I have to come out, print it as a JavaScript command, and then move in my string. So here I'm going to use this as a template string. So this is again a part of your ES6. ES6 में introduce हुआ है ताकि हमें बार बार वो string के अंदर बाहर ना करना पड़े और dynamically इसमें भी values assign कर सके. So I will say the sum is, and the way we include any variables inside this is using dollar and open and close braces. So ये तो हमने देखा है React में कि कुछ भी include करना था तो हम already कर रहे थे. But dollar is like, it is a kind of a dynamic value. And what are the values? The sum is basically I'm going to do some JavaScript functionality over here. A plus B. तो जो भी वैल्यू आएगा, अब अगर इसमें दो नंबर भेजा हमने तो नंबर ऐड करके भेज देगा. इवन अगर स्ट्रिंग मेरा नंबर जैसा है तो वो कॉन्कैटिनेट करके भेजेगा, राइट? तो ये एक रिटर्न वैल्यू. इसको और बेटर लिख देते हैं, एक ही लाइन में लिख देते हैं. तो अगर हमारे पास एक ही लाइन का रिटर्न है तो हमें ये रिटर्न कीवर्ड लिखने की भी जरूरत नहीं है, इतना लिखेंगे तो चल जाएगा. सो आई हैव रिटन ES6, complete ES6. Let's make it let, and this becomes a complete ES6 features. इसमें तीन ES6 के features हैं, एक let, एक arrow functions, and a template string. So these are the three features of ES6 that we have used in this function. So both of them are similar, but it looks much more neater to me, and it is much more easier to handle, and I don't have to go out of the string and come back. So this here is the backtick, the key below your escape. So that is the key that we use, and inside that we create the string that we want. तो हमने दो फंक्शन लिख दिया है इस provider.js में. एक चलो constant value भी पास कर देते हैं, and that is going to be const. constant ही लिख देते हैं इसको, is equal to कोई भी random value 9.76543, एक random value. तो ये फंक्शन, ये फाइल क्या कर रहा है, तीन चीजें प्रोवाइड कर रहा है. एक, अगर हम एरे भेजते हैं तो एरे का काउंटर दे देगा, एडिशन भेजते हैं तो एडिशन दे देगा, कांस्टेंट भेजते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू जो भी होगा हमें यूज करना है वो यूज कर सकते हैं. नाउ आई वांट टू यूज इट इनसाइड दिस पर्टिकुलर स्टफ, और यूज इट इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन दैट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट. तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग को ये चीज एक्सपोर्ट करनी होगी. Now if we go back to the statement, it said
inside our Node.js global, if you remember, it says in the browsers, the top level scope is the global scope. This means that within the browser, where something will define a new global variable. In Node.js, this is different. The top level scope is not the global scope, where something inside a Node.js module will be local to that module. So what does it mean is कि यहाँ पे आपने var counter लिख दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि var counter आपको सब जगह मिल जाएगा. var counter global हो गया इस particular module के लिए. So module is basically a file where we have a lot of instructions and we can reuse this files. आपने React में already ये चीज देख आपने use कर लिया है already in the form of import and export. Now we are showing you on a more crude level or a raw level कि ये होता कैसे. तो under the hood functionality. तो हमें ये चीज export करनी है. So that's why we have this module thing, module of property. As you can see over here, और side में भी होगा कहीं पे. Yeah. So this module property is basically helping us do this, and we can export the module, something like this, whatever module we want to export, and use it somewhere in our code. So that's what I'm going to do. I'm going to say module, and this is what we use, dot exports. I am specifying कि ये वाला मॉड्यूल से ये वाला फंक्शन एक्सपोर्ट करो. तो ये ग्लोबल है इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए. तो आई कैन यूज दिस एज अ पार्ट ऑफ दिस. ठीक है. तो हमने एक काउंटर बनाया, एक्सपोर्ट काउंटर इज इक्वल टू क्या जो हमने क्रिएट किया. ये सारी चीजें हमें एक्सपोर्ट करनी है सिमिलर टू आवर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वाली चीज. बट हम यहाँ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे मल्टीपल चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो एडिशन और एडिशन. Does it look like that I am creating a kind of a property to this exports object? Does it make sense? Like मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक कोई तो exports object है, उसके अंदर मैं अपना खुद का object assign कर दे रहा हूँ, which is these functions. ये समझ में आ रहा है ना? You are not missing this point out. Because if we do not export this, we won't be able to use these features anywhere else. And this is the module functionality. This is the module pattern in Node.js, which is so popular. And this is also in line with the single responsibility principle. So let's say we are creating a functionality where we only check or validate a user, and the user का कुछ validation checks है जो हमारे कंपनी में करना होता है, और वो इस फंक्शनैलिटी में और इस फाइल के अंदर होगा या इस मॉड्यूल के अंदर होगा. ओके. सो दैट इज समथिंग सिमिलर टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन. नाउ वी कैन यूज दिस मॉड्यूल्स. अब ये अपने फाइल में कहीं पे भी हम यूज कर सकते हैं या अपने प्रोजेक्ट में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. तो द रीयूजेबिलिटी फैक्टर हैज इंक्रीज्ड फॉर दिस वन एज वेल. एंड व्हाट इज द नेम? provider.js. Yeah. So now if I want to use this, I would want to require this. I would want to require all the things from the provider.js. So for that, we use this require, and from where it is. So basically, not template string, I will use a normal string, ./provider. It is something similar to your import functionality, right? So this is the ES5 version of import functionality. अभी मैं अगर इसको बोलूंगा कि क्विक फिक्स करो, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा ES6 मॉड्यूल में और import stuffs from provider, right? But this is not going to work क्योंकि मेरा जो सेटअप है 10.15 पर है और इसमें मैंने अपडेट नहीं किया है, तो एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशंस की ज़रूरत होती है ES6 पढ़ाने के लिए इसको, क्योंकि वही प्रॉब्लम होगी, उसको समझ में नहीं आएगा कि इंपोर्ट क्या मतलब होता है. तो इसलिए आई स्टिक टू रिमूव इंपोर्ट, सॉरी, या आई स्टिक टू रिक्वायर. सो इंपोर्ट इज बेसिकली हाउ इट वाज यूज्ड प्रीवियसली in JavaScript.
जावास्क्रिप्ट में पहले रिक्वायर कीवर्ड यूज करते थे और उसमें जो चीज चाहिए वो पास कर देते, and that comes as a part of stuff. So if I say console.log stuffs, it will give me everything inside this provider, and I will go ahead and run app.js. What do you see? It says that ठीक है, आपके stuffs के अंदर तीन चीजें हैं, तीन प्रॉपर्टी है. इट्स लाइक एन ऑब्जेक्ट दैट यू आर रिसीविंग विद थ्री प्रॉपर्टीज. पहली प्रॉपर्टी काउंटर है जो कि खुद में एक फंक्शन है. दूसरी प्रॉपर्टी एडिशन है जो कि खुद में एक फंक्शन है जिसका नाम एडिशन है. फर्स्ट वाले का नाम काउंटर है. और एक कांस्टेंट वैल्यू है. सो इफ आई वांट टू एक्सेस एनी ऑफ दिस, हाउ विल आई डू इट? हाउ विल आई डू इट? I can say stuffs dot counter or stuff dot addition or stuff dot constant, right? So let's say I am creating a array और इसमें कुछ वैल्यूज हैं. ठीक है, इतनी वैल्यूज हैं. अब मेरे को इसका काउंटर चाहिए कि मेरे को बस चाहिए कि array का काउंट क्या है. तो मैं क्या बोलूंगा कि stuff console dot log, बिकॉज उसमें कोई console dot log स्टेटमेंट नहीं है as far as I remember. I will say I will use this function from provider और जहां से भी हमने लिया है. तो stuffs के अंदर से काउंटर फंक्शन लेते हैं और उसको ये array पास कर देते हैं because it expects an array, right? So now I'm going to run this. The array has 10 values. It does print me that, right? So it's like the reusability concept again coming into picture. Single responsibility principle. हमने एक फंक्शन बनाया जो कि काउंटर फंक्शन है और हमने उसको यूज किया based on my usage. अब मेरे को दो चीजें ऐड करनी है. Let's say I want to add some two values. I will say ठीक है, console.log stuffs dot addition और इसको दो वैल्यूज पास कर देते. तो array से ही पास कर देते. चलो, array का 7th एलिमेंट और array का 4th एलिमेंट. We are passing these values. And if I print this, the array has 10 items. The sum is 13. Pretty awesome, right? How Node.js is giving us this module system and we are able to reuse this whole structure of Node. और ऐसे करके हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. Let's say कि हमें again कुछ addition चाहिए and we have some constant values. And यहाँ पे instead of passing this, I will say stuffs dot constant. तो constant और array at the 4th value मेरे को कॉल करना है. And if I do this, it gives me the sum is this. The sum is 14.76543. So this is the module pattern. This is the required pattern. So when we are trying to create the backend logics, we are going to split it into these stuff. And this is how we are going to understand or create different functionalities in a single file, club it all together and have a centralized system which is actually using all those small modules. Does it make sense? तो ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल है. इसका एग्जांपल्स हम लोग और बेटर करेंगे. इसको हम लोग एक और तरीके से भी लिख सकते हैं. एक्चुअली मैं आपको दिखा देता हूँ. एंड दैट डिफरेंट, एक चीज को आप बहुत तरीके से कर सकते हो इन एनी काइंड ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट इज जस्ट दैट you have to be sure कि आप जो चीज कर रहे हो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो. It should be utilizing minimum CPU or minimum it should have a maximum performance, and that comes with the knowledge of your time complexity of how you are using a certain data structure or how you are using that particular solution. कितना डेटा उसमें जा रहा है, कितना array का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के कॉन्सेप्ट से आप उसको बेटर कर सकते हो. ओके, तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि module.exports और
since this is an empty object initially जब इसमें कुछ भी नहीं था या मैं इसको नहीं असाइन करता तो ये empty object रहता, which is the global object. अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि counter है, which is what? Counter. Addition है, उसका वैल्यू क्या है? ये फंक्शन. और कांस्टेंट है, उसका वैल्यू क्या है? कांस्टेंट, राइट? और इसको पार्क कर देते हैं अभी के लिए. सो लेट्स सी इफ दिस वर्क्स और नॉट. And it works the same way. So this is your module pattern in your Node.js. समझ में आ रहा है Node कैसे काम करता है? How does Node work? Any doubts till now? I can write that. If I write that, that is also a ES6 feature, Nitin, जो आप बोल रहे हो. ES6 feature है, which is like इस counter का जो value है, सॉरी जो की है एंड जो वैल्यू है, अगर सेम वेरिएबल का नाम है तो उसको हम सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको हटा सकते हैं और ये कांस्टेंट को ऐसे ही रहने देते हैं. एंड इफ आई डू दिस इट विल स्टिल वर्क. सो दिस इज अ ES फीचर. अगर ये वैल्यू और ये नाम है तो अगर सेम है तो सिर्फ एक वैल्यू लिखेंगे एंड इट विल क्लब इट टुगेदर. समझ में आ रहा है? ES6 ने क्या काम किया है? पूरा सिंटैक्स को इजी कर दिया है लिखने के लिए. बट टू अंडरस्टैंड दैट इजी सिंटैक्स आपको पहले का भी जानना जरूरी है कि होता क्या था, नहीं तो फिर इजी सिंटैक्स के चक्कर में अंदर की चीज भूल जाते हैं लोग. ओके, मेक सेंस? ओके, नाउ apart from these self-defined modules, we also have certain inbuilt modules from our Node.js, जिसके बारे में हम लोग और जो हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे. तो वन सच इज द सर्वर मॉड्यूल. तो हम लोग सबसे पहला सर्वर बनाते हैं अपने लाइफ का. ठीक है, तो यहाँ पे बंद करते हैं इसको. I'll create a folder and call it server, client and server. ठीक है, और इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं and I call this as server.js. Now what I'm going to do right now is I am going to use an inbuilt module of Node.js. And how do I do that? I should go inside server.js. Okay. And to use any inbuilt, I'm going to use a HTTP variable का नाम रखते हैं and require something that we had done previously for the modules, but at the moment I'm not going to give any kind of location because this is a part of your Node.js environment and I'm going to use a HTTP server. What does HTTP stands for? Hypertext Transfer Protocol. And this is the most important protocol for our web interactions. तो protocol का मतलब क्या होता है? It means that I'm going to interact with some other system in a way so that both of us understand the language that we are speaking. Now, if you are from, let's say, Hyderabad and you speak Telugu, and I am from China. No, I don't want to be a Chinese. I am from Germany. I am from Germany, okay? और मैं हैदराबाद वाले को सिर्फ तेलुगु आता है और मेरे को सिर्फ जर्मन आता है. ठीक है, and we start talking to each other and we do not understand what
either one of us is saying. So that conversation makes no sense. Gूगल ट्रांसलेटर यूज करोगे तो आप क्या करोगे, एक प्रोटोकॉल सेट करोगे. आप बोलोगे ठीक है, तुम जो बोल रहे हो मैं गूगल ट्रांसलेटर में रिकॉर्ड करता हूँ, उसको कन्वर्ट करता हूँ अपने लैंग्वेज में, पढ़ता हूँ, समझता हूँ, उसके बाद आई रिप्लाई इन जर्मन, यू डू द सेम थिंग. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम सेटिंग अ प्रोटोकॉल बिटवीन अस, राइट? Or even a better protocol, what if the person from Hyderabad knows English and the person from Germany also knows English, and both of them can interact in English? So they are trying to kind of setting the protocol for each other, saying that okay, let's talk in English so that it makes sense to both of us because I will be able to understand that. ठीक है? तो अब क्या होगा कि बस थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट के बाद अपूर्वा, आफ्टर दिस कॉन्सेप्ट, तो अब क्या होगा कि हमें ये प्रोटोकॉल सेटअप करना है. ये प्रोटोकॉल सेटअप हो गया तो अब हम इंटरैक्ट कर सकते हैं. तो सिमिलरली वेब में ये प्रोटोकॉल चलता है कि ठीक है, हम ये वाला प्रोटोकॉल यूज करेंगे और इसका जो तरीका है बात करने का, उसमें हम लोग इंटरैक्शन करेंगे. एंड दैट इज व्हाट योर HTTP प्रोटोकॉल इज. नाउ टू क्रिएट अ सर्वर, हमने ये HTTP यूज किया है और इस HTTP के अंदर अब बहुत सारे फंक्शनैलिटीज आ गए. तो बिफोर आई डाइव डाउन एंड स्टार्ट यूजिंग दोज फंक्शनैलिटी, लेट्स चेक इट आउट ऑन द मेन पेज. सो HTTP के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं. तो इसमें सबसे पहले ये तो हमने यूज कर लिया, रिक्वायर HTTP मैसेज हेडर रिप्रेजेंटेड बाय ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, इसको देखेंगे बाद में, पहले मेरे को सर्वर देखना है. तो हम लोग सर्वर क्रिएट कैसे करते हैं? तो इसमें होता है एक क्रिएट सर्वर करके मेथड, क्रिएट सर्वर. हाँ, तो ये मेथड होता है. अभी हम लोग को बस एक सर्वर क्रिएट करना है और उसमें सारा वैल्यूज भेजना है कि कैसे कनेक्ट होगा, कौन आएगा, क्या रिक्वेस्ट आएगा, ऑल दैट थिंग इज गोइंग टू हैपन. So to do that, we need to listen to the request, right? And you see there is a listen thing over here. तो अगर यहाँ पे हम लोग listen को यूज करते हैं, let's say http dot listen, ठीक है, क्योंकि ये HTTP का एक फंक्शन है. You see it tells me that I require a port number and I will say I will specify this as 5000. Then it requires an address, IP address or host name, which is an optional thing. Basically मैं बोल रहा हूँ localhost, so I will say localhost. और एक callback function, and this says console.log started the server listening at port 5000. So if I use this, and let's see what happens first of all, and then we will see what we have written. I'll go out of this, I'll go inside client server and I'll say node server. Chala diya. Okay, there's a problem. These are the optional things. Server.listen. अच्छा, ये callback को बाहर करते हैं और यहाँ पे एक एड्रेस डाल देते हैं instead of having localhost or is 5000 being taken. http.listen is not a function. Yes, मैंने गड़बड़ कर दिया ना. This is okay. मैंने पहले सर्वर क्रिएट नहीं किया. पहले सर्वर क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम लोग उस पे लिसन करेंगे. तो ये मैंने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, सॉरी गाइस. तो पहले मेरे को एक सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा. I will start creating a server and to do that I will use this module called create server. ठीक है, अब इसमें कुछ ऑप्शनल चीजें चाहिए होती हैं. तो एक कॉलबैक फंक्शन होता है which is this and which has the request. The first thing is the request and the second thing is the response.
ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मॉडल क्या करता है? इट्स बेसिकली जो रिक्वेस्ट हम फ्रंट एंड से भेजेंगे और जो रिस्पॉन्स हम यहाँ से क्रिएट करेंगे, इसको हम लोग और डिटेल्स में और बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, बिकॉज दिस इज हाउ आवर इंटरेक्शन इज गोइंग टू हैपन. सो HTTP क्रिएट सर्वर, HTTP अपना ये मॉड्यूल है और ये क्रिएट सर्वर है. सर्वर क्रिएट करेंगे, यहाँ पे ये फॉर्मेट सेट है. पहला ये जो कॉल बैक इनसाइड क्रिएट सर्वर हमने लिखा है, इसको पहले रिक्वेस्ट मिलता है, फिर रिस्पॉन्स पैरामीटर मिलता है. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सीधे बोल रहे हैं कि ठीक है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से रिस्पॉन्स क्रिएट कर देते हैं सर्वर पे, एंड आई विल से कि एंड करो और एक वैल्यू भेज दो, हेलो. ओके, सो इफ आई सेव दिस एंड अब ये सर्वर पे क्रिएट सर्वर का रिस्पॉन्स आ रहा है, तो हम लोग वो लिसन कहाँ कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कहाँ लिसन करेंगे, 5000 पोर्ट पे लिसन करेंगे. सो आई विल से server dot listen and let's execute this and see if it works. And it says started the server listening at port 5000. तो हमने अपना सबसे पहला बैकएंड सर्वर क्रिएट किया है guys, congratulations. And if I go back and if I hit localhost, which is this, but the port number is going to be 5000, I guess, right? It was 5000, yeah. So if I hit this, it is sending me a response. So when I send a request, this is the request that I'm sending. And this thing goes, so it's like my backend is up and running as a server. Using this HTTP, I have created a server. और उसमें जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है, बेसिकली जो रिक्वेस्ट आ रहा है, हम लोग ने जो भेजा था नॉर्मल एड्रेस बार से, दैट वाज द रिक्वेस्ट, और हमने कुछ नहीं किया. और यहाँ पे एक रिस्पॉन्स हमने जनरेट किया है कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आए, एक रिस्पॉन्स बंद करके भेज दो, हेलो, एंड दैट व्हाट गेट्स प्रिंटेड इन माय बैकएंड. और उस सर्वर को सुनने के लिए हमने ये पोर्ट खोल के रखा हुआ है, तो जितने भी रिक्वेस्ट आएंगे 5000 पर ही आएंगे. ठीक है, अगर आप ये सेम चीज 3000 पे करोगे, 3000 पे करोगे, तो बोलेगा कि कांट बी रीच, क्योंकि उसको पता नहीं है लोकल होस्ट के 3000 पोर्ट पे क्या है, कुछ नहीं चल रहा है, खाली पड़ा हुआ है, वो बंद है वो. ठीक है, सिस्टम 5000 वाला सिस्टम चल रहा है, और वहां पे सिर्फ जब भी कोई रिक्वेस्ट आता है तो वहां से एक रिस्पॉन्स वापस आता है. प्रीटी कूल, राइट? And this is our very first server that we have created. And this is actually, you can say that I have created a backend. नहीं चलेगा, दो सर्वर सेम पोर्ट पे नहीं चलेगा. वो बोलेगा कि 5000 पे कुछ ऑलरेडी चल रहा है. या कभी कभार आप देखना, लेट्स से अगर मैं एक लाइव सर्वर चला दूं, लेट्स ट्राई दिस. लाइव सर्वर चलाता हूं, ओके, एंड इट सेज इट इज रनिंग एट पोर्ट नंबर 5500. अब यहाँ पे 5500 करते, और क्योंकि चेंज किया है, मेरे को फिर से क्लोज करके चलाना पड़ेगा. ओके, सो अब आप देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ या यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, लोकल होस्ट 5000 पे रिक्वेस्ट भेजूँ, तो वो नहीं चल रहा है. लोकल होस्ट 5500 पे भेजूँ तो क्या आएगा? What will come? What do you think? Try this out. $5,000. Screen not sharing. Okay. ये एड्रेस पे 1270.0.1 5000 पे मेरा लाइव सर्वर चल रहा है, और लोकल होस्ट डॉट 5500 पे लाइव सर्वर ये वाला सर्वर चल रहा है. बट कैसे कैसे चल रहा है?
अगर मैं ये सेम चीज स्पेसिफाई कर दूं यहाँ पे 127.0.0.1, ये मैं के लिए एक मिस्ट्री क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। अब मैंने इसको चेंज कर दिया है, क्या ये काम करेगा? ट्राई करना। आई जस्ट वांट टू सी क्या है। लिसनिंग एट पोर्ट नंबर, इसका नाम चेंज कर देते हैं। बोथ आर लोकल, या बोथ आर लोकल, सेम पोर्ट नंबर है। क्या दोनों सेम काम करेगा? ट्राई करना, ठीक है? दिस इज समथिंग दैट आई एम लीविंग विद यू गाइस. So we have created the very first protocol, used the very first protocol. We have used a create server functionality from the HTTP module that is provided to us by Node.js. And then we started listening to that because this creates a server basically. तो सर्वर के अंदर कुछ फंक्शनैलिटी है, वो हमने यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। उसके अंदर एक फंक्शनैलिटी है, मेथड है लिसन करके, क्योंकि वो बताता है कि कहाँ पे हमको लिसन करना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस इज द एड्रेस www.netflix.com is the DNS server that we use. वहाँ पे एड्रेस कुछ ऐसा ही रहता है, आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर। DNS is just the name. It gets converted to IP address and a port number. Okay? And ये भी आप देख रहे हो कि जब हमने सर्वर स्टार्ट किया तो ये एक प्रिंट कर रहा है मैसेज। तो रिएक्ट भी आपको समझ में आ रहा होगा, राइट? कि रिएक्ट कैसे काम करता है, राइट? कि रिएक्ट में जब हम npm स्टार्ट कर रहे थे तो हम एक सर्वर क्रिएट कर रहे थे। वो सर्वर हमें फंक्शनैलिटी दे रहा था अलग टाइप की, उसका कुछ प्री स्पेसिफाइड मॉड्यूल्स थे जो हम यूज कर रहे थे। ओके, सो आई थिंक आज इतना ही रखते हैं। कल जब हम लोग मिलेंगे तो वी विल go a little bit deeper in these protocols, what these protocols are, और Node.js को और थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, and it will give me a clear picture of this Node.js कि क्या होता है, क्यों इतना यूजफुल है, एंड इस पे हम लोग फिर एक्सप्रेस लिखेंगे विच इज अ फ्रेमवर्क रिटन ऑन टॉप ऑफ दिस, वो हम लोग देखेंगे। यस, करेक्ट नाम। सो इंटरनली इट डज द सेम थिंग, बट उसमें बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत सारे डिपेंडेंट मॉड्यूल्स है। तो नोड मॉड्यूल्स का नाम अब थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि क्यों उसका नाम नोड मॉड्यूल्स रखा हुआ है, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिपेंडेंट मॉड्यूल्स होते हैं, राइट? ओके, आई थिंक दैट इज इट फॉर द डे। एनी डाउट? नोड समझ में आ रहा है? इसको पुश कर देते हैं। ये नाम आप अपने हिसाब से भी लग सकते हो, ए और बी भी, क्यू और पी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट दिस नीड्स टू बी समथिंग रिलेटेबल। तो ये हमेशा फर्स्ट पैरामीटर विल बी द रिक्वेस्ट दैट वी आर गेटिंग, विच इज आवर एड्रेस, जो भी रिक्वेस्ट भेज रहा है, और रिस्पॉन्स इज बेसिकली दिस। तो अब यहाँ पे मेरे को ये रिस्पॉन्स चेंज करना है। So this is something that you have to keep in mind. The order matters. Request and response का order यही होता है create server के callback function के अंदर. So this is a callback for create server. ठीक है? Something similar to our create interval में भी एक हमने callback function लिखा था. Something similar to that. Yeah, yeah. So please do submit your assignments by tonight. Copy to clipboard function. Is there a GitHub that you have pushed your code in, Shivansh? Yeah, so kindly share that with me on Slack, and I'll take a look at the code that you are doing, and I can see if there is some problem. I can help you out with that. नोट पे लिख रहे हो? कहाँ पे लिख रहे हो?
कॉपी टू क्लिपबोर्ड तो एक इवेंट होगा बेसिकली. आर यू टॉकिंग अबाउट मोबाइल डिवाइसेस और वेब? किसके लिए बना रहे हो? वेब के लिए, ठीक है. कॉपी टू क्लिपबोर्ड फंक्शनैलिटी वेब के लिए दिखाओ. चलो सब देखते हैं. शेयर करो स्क्रीन. इन द मीन वाइल I'll just stop the share. Wait 1 second, just let me push this code to GitHub. Git commit -m node modules and server. आप लोगों को कोड मिल जाता है ना? अब तो कोई दिक्कत तो नहीं होता है. No one has any problem in getting the code. Git push origin main. Yeah, so I will stop the share for now. All those who want to leave can leave. Then we will come one by one. शिवांश का पहले डाउट देख लेते हैं, then we will come to रविंद्र.